respected chairperson, distinguished guests, esteemed faculty members, researchers, students, and participants. A warm very good evening to everyone. It is my great pleasure to introduce our esteemed speaker, Professor Dr. Akhilesh A. Rao, Dean and Professor, Faculty of Computer Applications, IT and Sciences, AKS University, Satna, Madhya Pradesh. Dr. Rao is a distinguished academician and researcher with over 25 years of experience in teaching, research, and innovation. He holds a PhD from NANIT Bhopal and MTech in computer science and engineering and several prestigious certifications including UGC, NET, Microsoft Azure, RHCSA, and NPTEL. He has published more than 240 research papers, received over 800 citations, authored and edited 20 books, and holded around 20 patents. His research interests include computer networks, algorithms, artificial intelligence, and emerging technologies. He has been honored with several prestigious awards, including the Best Research Supervisor Awards, Best Faculty Award, and Best Research Paper Award, and has guided numerous PhD, postgraduate, and postgraduate undergraduate researchers. Today, we are privileged to have Professor Dr. Akhilesh A. Bau with us to share his valuable knowledge and expertise. On behalf of Edu-Mentors Pvt Limited, I extend a heartfelt welcome to Professor Dr. Akhilesh A. Bau. Ladies and gentlemen, please join me in giving him a warm virtual round of applause. Thank you very much, madam. Thanks for your nice introduction for me. And no doubt, it was really a privilege for me to be part of this team in front of you. So I'm very happy to see such type of gathering in this Google Meet session. And I'm especially giving thanks to Edu-Mentors Society and his leading team for organizing such a great seminar with continuous connection on different sections like educations, industry, and so on. So let us start with all these things. So first of all, I'm giving thanks to all the participants that you are part of this international summer school training. So let me share the screen first. I'm trying to share the screen. I hope my video is okay, and I hope audio is also okay. Okay, am I audible properly? Can you tell me whether I'm audible? Yes, sir. Yeah, thank you very much. So this is my screen. I think my screen is now in the full form mode, and you can see this screen in my screen. Uh, Give me the outcome, whether this screen is visible to you properly. So this is Dr. Akhilesh. First of all, a warm good evening to all of you. I am supposed to be an expert of this domain in front of you, and I'm currently working as a dean computer science in AKS University Satna. No doubt, I am having some sort of research experience, some sort of experience related to computer science, and getting experience related to agriculture just because of society like Edu-Mentors Society and university like AKS University. So this is not me. This is you trying to carrying the knowledge in your backpack. So I'm again thankful for inviting me in this. So this is your international summer school, I think. So this is of duration 21 days. And thanks to you that continuously you are connecting and getting knowledge from experts from various domain.
This is the vision of Edu-Mentor Society, that to be a global leader in education, training, and consistent services. So the main part is to provide trainings, provide different platforms related to conference, seminar, workshop, blah blah blah. All these are the domains related with Edu-Mentor Society. So now you have to say thanks to such society that due to them we are be a part of around 20 days program. So today I'm trying to connect different issues which is no doubt connected with agriculture and artificial intelligence. We are trying to find what is the history, what are the challenges, what are the impact of AI on society, how we can find that whether what are the major domains for AI research, like different case studies, and all these things we'll discuss in today's session. So I'm moving ahead. This is the introduction. Basically, why I am handling this. I am the domain expert of artificial intelligence, and might be you are the domain expert from agriculture, biotechnology, paramedical, biology, zoology, and all those domains. The main objective is that whether AI is related to computer domain person or for all. So answer is this is for all. This is for all means all. Every domain expert can embed artificial intelligence like services, GIS like services for their betterment or automation. Objective is to provide a modern biotechnology. We want to revolutionize the way we approach agriculture, forestry, and resource management. I hope these technology will be part of our education system, our technical system, so that these technology can enhance crop yielding and sustainability. And no doubt for that, we will improve every sector in the form of efficiency, in the form of accuracy, and so on. Now, this is the part where I have to say that artificial intelligence in agriculture, because we are connecting with trying to connect with agriculture especially, and agriculture means light science also. So whether it directly correlating the domain or we have to find the domain. So answer is we have to find the exact or precise domain. How we can find it? So we have to analyze the things. What are the data with us? We have sensors. We have data related with weather pattern. We have data related with satellite imaginary. We have different telescopic images. All these things are already available. Government of India provides different platforms, different types of data from different source directly from satellite or weather stations. Now, what's the requirement? Real time data streaming must be analyzed by AI. This is the objective. Data is with us. Analysis करने के लिए we have Excel like software also, but we need deep analysis, and deep analysis is only possible with AI. Artificial intelligence provide different models. Actually, these models learns their self. If you are giving data, if you are providing data, आपने एक रील देखी होगी चैट जीपीटी में. चैट जीपीटी यहाँ से समुंदर हटा दो, चैट जीपीटी उसको बड़ा कर दो, चैट जीपीटी इसको छोटा कर दो. This is what a reel generally continuously moving, and that reel can be motivation for us, that what we are providing the data, based on the data chat gpt like platforms are giving you the information in the form of information in the form of images, information in the form of videos, information in the form of tables. Yesterday, just I have to speak with personal information. My relative is in Mumbai, and there are the data of CET means common entrance test. This is entrance test for engineering admission. I have seen that CET provide me the data in PDF file, but there are 1500 pages around, and all pages are small tables. How can a person read 1500 pages? How can a person can analyze whether cutoff is eligible, whether this college is fruitful for me, whether what is the cutoff of what which branch? It is just near to impossible.
In such situation, artificial intelligence provide me a source. That PDF is input, and now I have to prepare the data. I have to analyze the data. I'm asking whether it is the important data or it is not an important data. For this percentile, which college, which branch I can opt. This is what known as analysis. So this analysis is very important in each and every field. So what what AI can do? AI enables real data, field specific action that boost crop yield, resilience, and environment sustainability. I hope these are the familiar terms. Objective is boosting the crop yield. Objective is providing sustainability to environment. Environment means earth. So this is the field where we can enable real time information. We can work on real time information. It extends beyond traditional farming into forestry management. Traditional farming, what we are doing is good. No doubt, today's farmers are doing very well because they are having a number of source for learning. What is the objective? We have to extend the information. We have to extend beyond traditional farming into forestry management, supply chain logistics, land recoveries, all these. So integrate AI, GIS, biotechnology, and make a unified framework. Now this is the requirement. In third or fourth slide, I can show you how we can merge the thing. So objective is crop optimization. Objective is precision farming. Crop optimization, precision farming means we want to track the data continuous basis. If you are tracking the data on continuous basis, it ensures resource can be work better and maximize net crop output up to 20%. This is around 20%. If you are tracking continuously, like tracking of share market tracking, this if you are tracking that data continuously with the help of AI, then might be this figure can be 20 to 30%. No issue. Similarly, water is very precious. Objective is save water. How can we? We don't know. We don't know. What are the weight reason? We don't know. Where we have to put the information, we have to put the water in what quantity. If spraying water applied only where needed, you can save the water. Similarly, in the case of chemical uses, objective third is computer vision. Vision means monitoring. Monitoring means camera. Monitoring means drone observation. Monitoring means identification of information from sensors. These are monitoring. So we can put a vision over there, either in the form of camera or in the form of data coming from sensors. So what are the deficiencies? What whether there is a water stress early? What are the information available? We have to observe it. This can be performed very easily with the help of use of AI model in the field of agriculture. So it will provide us information related to optimal plant density, seeding schedules, and fertilizer replacement. So no doubt, objective is clear, crop optimization and precision farming. So can I move to next part? Say yes sir, okay sir. I will feel that I am alive on the net. Coordinator, please coordinate with me because I can listen you only. Otherwise, I have to shift my screen and maximize to video chat. Hello? Anyone is active? No one is active. Good evening, everyone. I think I have disconnected. No one is giving reply.
Stop sharing my screen. Ankit Banerjee, Sparsh Singh, Supriya, Simran, Shantanu. I'm expecting something in chat. At least write good evening so as to I can continue the session. Yes, Vikramji is active. I'm expecting active participants, so I have not disconnected. That's great. So again, I have to share the screen. I hope you have a rights to unmute your mic or something or not. I don't know. So let us move on. Session will be very interesting after completion of this agricultural part, and we'll move to artificial intelligence, history, and domain also. So artificial intelligence, just we have discussed that artificial intelligence manages everything very precisely. We have already discussed that. What is the objective? Objective is that we have to combine real-time soil moisture metric with weather forecast for automated watering. This means our problem is identification of soil moistures, whether less or more. So we can merge these two features. Similarly, satellite remote sensing track field moisture variations and crop water stay already discussed. Intelligent watering prevents over irrigation, already discussed. Identifies micro level dry and wet spot across the field to enable variable rate irrigation, already discussed. This is written in the form of example only. Boost overall agriculture water use efficiency by 30% compared to conventional method. Already, this is what my observation. It can be increased. It can be more than 20%. That's proof. Now, pest and disease surveillance using AI. Similarly, I have to say that that was the case of water, uses of water. Similarly, this is the case of identification of disease on crop, on leaf, or due to weather changes, whether pesting is essential or not. This replace करना होगा हमें. We have to replace manual spotting, identify the leaf, but continuous surveillance is required. We have to identify targeted spot treatment while preserving beneficial insects and pollinators. Map disease breakouts across vast timber plantation so as to we can preserve our forest. So, summary. In summary, we can say that we have to observe the things on the basis of different pattern of computer visions, either by cameras or by drones, already discussed. We need now sensors because the next generation is rely on IoT because IoT is the combination of internet and sensors. So we have to inbuilt some sensor. We have to embed some sensor in agricultural land or forest land so as to we can identify different types of parameters and that parameter can be analyzed with the help of AI. Similarly, we need AI powered farm management software. Basically, what AI powered farm management software do, they uses machine learning models so as to we can make some sort of decision because machine learning provides us decision making. Machine learning means we are learning, our machine is learning with the help of input, and after learning it gives an analytical or predictive output. Such type of softwares are already available like climate, field view, voice yield, and Agri-V. They are integrating satellite data, weather analytics, and machine learning models. So we have to shift to such type of farm management softwares. Agronomy advisory. I know
you are well aware that Bhashini is a software provided by Government of India. This is AI based of sorry, this is AI based software, and in this farmer can ask in different languages, multiple regional languages, and they can ask in their Bagheli, Bridge, Urdu, Marathi, Punjabi, in such a language, they can ask the questions, and this Bhashini type of software provides you different information. Nowadays, there are, sorry for this break, generative AI and LLM models. So we have to use such models also. I hope you are getting these points, but these points are very tough because what we are expecting that the farmer who is not an educated person, even they are not able to use Android properly, and we are expecting much more things from him. So solution is that make a simple app, and if they cannot write in English or in Hindi using typing, so there must be a solution of voice command. They can chat with their voice, and this will be the most probable solution. This artificial intelligence is the term which is not the term of 2026. This is the term from 1950. We are working on Alan Turing machine from 1950 till 2022. You are aware with chat GPT. There are number of transmissions occurs. We have met with our Siri in 2021. Similarly, Alexa comes into existence in 2014. This is the journey from 1950 to till date. All these things are in our favor. All these things are in our favor. We are in upgradation mode. Nowadays, we are working on different models. They are not only artificial intelligence model. After 1970, there is another term comes which is known as machine learning. You can see this graph, this chart. Artificial intelligence is the whole part, where machine learning is a sub part of AI. Similarly, nowadays, from 2010, the new term comes into existence, deep learning. Deep learning, layered architecture, and deep learning is again a sub part of machine learning. Means if you are saying AI, then you are already saying machine learning as well as deep learning. Getting my point? This is the journey. Once again, this is journey of models, and this is the journey of terminology of AI, ML, and DL. So, so if I'm asking a question, what is Chat GPT? So you can say the answer from this diagram. Chat GPT is a deep learning model. This is a concept of deep learning. Okay, getting my point? Now, so why not everyone is incorporating AI into their software, websites, app? The answer is AI algorithm is very complex nowadays. It requires very technical knowledge to set up a AI data center. The major problem is current nowadays artificial intelligence technology is very expensive. And I am already saying artificial intelligence learn. AI model learn. But to learn, we have to provide the data. But unfortunately, we are very biased. If we are small number of data, we are giving it and we are predicting that our AI model trends. We have to give the data in the form of GBs also. So as to for each and every situation, AI model must run. So AI systems are prone to bias because the training is not proper. If training is not proper, so AI cannot interpret the right information. See, this is very difficult to implement. There is the issue of security and privacy because AI is available on web, and no doubt still vulnerable to malicious attack. AI can do anything. If we are giving training to AI, and it can do anything. So what is the objective? Just before few slides, we have discussed that artificial intelligence is essential for agriculture, but it is not up to agriculture. If you are dealing with any domain,
if you are faculty of any domain, if you are having any ideas or expertise in any domain, you have to think that now this concept can be worked with artificial intelligence. Suppose currently quantum computing is the newest field which nowadays it comes into existence. Why not we can combine com- quantum computing with AI so as to we can improve the outcomes of quantum computing. Similarly, we have to generate some sort of platform where ethical AI can create a proper transparency. Every automation system or autonomous system both must incorporate with AI. If fan is running, why not we can inbuild some sensors and enrich it with some artificial intelligence command? Why it is not possible? Everything is possible. Only it requires our thought process that we must aware of everything. आप में से बहुत लोगों को ये समस्या है, क्या होगा एआई आ जाएगा तो एआई हमारा जॉब खा जाएगा? नहीं, आंसर इज जॉब खा जाएगा इज नॉट अ टर्म. जॉब डिस्प्लेसमेंट इज द सॉल्यूशन. जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा. टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी ग्रो होती है किसी भी फील्ड में. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? स्किलिंग. स्किलिंग की जगह मेरा वर्ड है रीस्किलिंग. वी नीड रीस्किलिंग. अगर मैं एक ही सब्जेक्ट एज ए टीचर 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, सेम पढ़ा रहा हूँ, so what requires is reskilling. I have to be a part of some new courses. I have to go for some certification. आपको तो शायद पता ही होगा, स्वयं पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्वयं. You have to register on that and reskill your skilling. If you are a teacher of 12th class chemistry, अपने आप को जज कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आईआईटीज के प्रोफेसर्स के साथ बैठकर, एनआईटीज के प्रोफेसर्स के साथ बैठकर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के रिनाउंड प्रोफेसर के साथ उनसे लर्न कीजिए एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. रीस्किलिंग एजुकेशन में कंपलसरी है, रीस्किलिंग इंडस्ट्री में कंपलसरी है एंड एआई इज डिमांडिंग दैट रीस्किलिंग. जो एआई का नहीं हुआ, हो सकता है जॉब उसका नहीं रहेगा. ये अगला फ्यूचर है. So you have to inbuild yourself with artificial intelligence. So एक दो चीजें और है. We are using LMS, है ना? LMS means आपके जो सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप अटेंडेंस देते हैं, बच्चों का एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड्स होता है, फीस होती है. हमें अपने LMS को भी AI बेस्ड बना देना चाहिए. क्यों बना देना चाहिए? So as to वो एनालिसिस करके बताए कि पर्सन टू पर्सन व्हाट इज द डिफरेंस. This person, this student requires more efforts in the field of unit 2 of your subject. ये पर्सन वीडियो देखता नहीं है, स्किप कर देता है. एनालिसिस इज रिक्वायर्ड. व्हाई एनालिसिस इज रिक्वायर्ड? सो एलएमएस में इसको इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए ताकि हम पर्सनल टीचिंग, पर्सनल मॉड्यूलेटेड टीचिंग प्रोवाइड कर सके. अभी ये नहीं है. दिस इज टोटली आउट फ्रॉम अवर कंटेंट. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? Transformation. Why it is required? Because AI integration is the next global economy having $15.7 trillion till 2030 only. So requirement is that आप AI को समझ लीजिए कि AI रिक्वायर करता है कि आपका जो वर्कफोर्स है वो डायनामिक हो जाए. फिर से रिपीट करता हूं मैं, जॉब डिस्प्लेसमेंट, नए रोल क्रिएट होंगे, collaborative works are required, reskilling is needed, work flexibility, productivity gain, diversity enhancement, and ethical consideration. These are the parameter which is required for learning AI, and AI will impact all these sectors. But as AI is on internet, so there is a risk, there is a chance of threats, and these are the chart I have prepared for you, that there are different category of risk. रेयर होने वाली रिस्क कौन सी है, वो रेयर वाली रिस्क सीवियर कौन सी होगी, इम्पैक्ट उसका सीवियर होगा या कैसा होगा. दिस इज व्हाट द, दीज आर द कंसर्न्स
which we have to deal when we are working with AI. No doubt, आप में से सभी कंप्यूटर साइंस के नहीं होंगे, but you are from computer science domain or you are not from computer science domain, but जब इम्पैक्ट पड़ता है, जब आपका अकाउंट खाली होता है, जब आप पे फ्रॉड कॉल्स आने लगते हैं, तब यहाँ कोई नहीं पूछता कि वेदर यू आर बिलोंगिंग टू कंप्यूटर साइंस, वेदर यू आर बिलोंगिंग टू एआई डोमेन. You might be, I don't have to use that word. You might be, I have to change that terminology. आप उसका एक पॉइंट बनेंगे जहां आप उसका पॉजिटिव और निगेटिव एंगल दोनों से टच होने वाले हैं. Basically, be a technical person in place of common man. That is why my objective. Now, already we have seen artificial intelligence can give benefits in the field of agriculture. This is what we are using something terms efficiency. We can improve the efficiency. We can improve the safety issues. We can improve the sustainability, even mobility also. There are number of case studies. Number of case studies. This is the great table, in my opinion. For example, you are in traffic light. You are standing in some square with your two-wheeler or four-wheeler, and what you are looking for, there are some traffic signals. They are green for 90 seconds. If no one is there, it works for 90 seconds. And suppose at the time t, at that time at that time duration itself, there is a heavy traffic on another location, another एंगल, लेफ्ट राइट, है ना, किसी एक डायरेक्शन में बहुत सारा ट्रैफिक है, और जहां लाइट ग्रीन है वहां कोई ट्रैफिक नहीं है. व्हाट हैपेंस, we are wasting our fuel just because of standing all these vehicles in that square. If cameras are there, if analysis is possible, why not we have to make that green light into red? It is not mandatory that green light must be open for 90 seconds. If no one is there, just off it. We can save the energy. We can save the time of people. They are waiting unnecessarily. In metro cities, there are number of traffic signals, and each signal, everyone is wasting their 1 minute, 2 minute, or they are wasting their fuels just for standing over there. So this is one example. Similarly, we are having our constitution, we are having our judgment system in the form of High Court, Supreme Court. We are having number of books of laws. Everything is now online, digitized. Why not? Depending upon the crime situation, we can provide the data to our AI system, and they can read and suggest these can be the solutions of this problem. ये सजा दी जा सकती है. Now question comes, can we do it 100% AI based? Answer is no. क्या हम इसे 100% AI बेस्ड कर सकते हैं? तो नहीं करना चाहिए. क्या रीजन है? क्योंकि रूल कहता है इस प्रॉब्लम की ये सजा है, इस पर हमें फांसी देनी है. बट फ्रॉम द ह्यूमन वैल्यू, अगर हम यहाँ उस एंगल से ऑब्जर्व करते हैं, सो वी आर नॉट गिविंग इन इंडिया, वी आर नॉट गिविंग फांसी लाइक पनिशमेंट टू एवरीवन. सो हमें सजेशंस लेने हैं. फाइनल डिसीजंस फ्रॉम मस्ट बी फ्रॉम ह्यूमन वन. जजेस ही उसके फाइनल डिसीजन दें, बट टाइम बचेगा, बिकॉज जजमेंट हम नेक्स्ट डे या 1 मंथ के बाद देते हैं. क्यों देते हैं? ताकि जो भी हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उसकी स्टडी की जाए, और किस लॉ से, किस केस के आधार पर, कौन से एंगल से हमें इसको पनिश करना है या नहीं करना है. तो हमारा जजमेंट फास्ट हो जाएगा. ऐसे ही इंडस्ट्री में भी बहुत सारी जगह पर हम वेस्ट मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर सकते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. देयर आर नंबर ऑफ केस स्टडीज हैं, तो चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, टूल्स हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड कि which case study is basically important for us. Actually, when I am making this slide especially AI research case study, I don't know about my audience. मेरा ऑडियंस किस डोमेन का मुझे नहीं पता था.
whether they are from education department, law department, chemistry department, medical department, computer science, bio, pharmacy, I don't know. तो मैंने कुछ केस स्टडीज इसमें डिस्कस की है. केस स्टडी क्यों डिस्कस करना जरूरी है? बिकॉज इट गिव्स अस आइडिया. यार मुझे भी ऐसा सोचना है, ऐसा हो सकता है, इसके डोमेन में होता है तो मेरे डोमेन में भी होना चाहिए ऐसा कुछ. बट वी आर नॉट थिंकिंग ऑन इट. एंड हाउ एआई मॉडल एग्जैक्टली वर्क, उसका नाम नहीं मालूम हमें. एज अ लेमैन वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट मॉडल्स और एल्गोरिदम नेम. सो लेट अस सी वन और टू केस स्टडी. अभी मैंने डिस्कस किया एआई क्रॉप डिसीज प्रिडिक्शन. Farmers detect crop disease too late and causing losses. So solution is that we use mobile app to identify leaf disease instantly. Technically, if you are belonging to some technical domain, then these are the model. In general मैं ये models के नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी कंप्यूटर फील्ड के नहीं है. These are the LLMs, MobileNet, YOLO, UNet, TensorFlow Lite, and so on. These are the model. Why these model only? Because these are the lightweight model and it can run well on mobile devices. I'm reading this thing properly because this is might be you are from agriculture, maximum of you are from biology. So what will be the outcome? AI enabled early crop disease detection and it reduces crop losses. So what is the key lesson? Models need diverse images from many regions. So we are providing with the help of mobile and after getting that information आपको predictions मिलने शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छे prediction मिलेंगे. So this is one example AI crop disease prediction. Similarly, nowadays early cancer detection. अभी महाराष्ट्र में 40 वुमेन्स के ब्रेस्ट कैंसर का इशू था. अर्ली स्टेज पर उसको डिटेक्ट किया. दिस इज द न्यूज फ्रॉम ओनली 1 year old. अर्ली स्टेज पर मीन्स जनरली ये सुना जाता है कि कैंसर 3rd या 4th स्टेज पर आ गया है, अब कोई सोल्यूशन नहीं. ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है महाराष्ट्र का. सारी की सारी 40 वुमेन्स की जान बचा ली गई, कैंसर फ्री कर दिया गया उनको जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली डिटेक्शन. होता क्या है कैंसर? कैंसर एक टाइनी साइन प्रोड्यूस करता है और डॉक्टर ऑफन इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते. नेकेड आई से हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते. इमेज में माइनर चेंज हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. सो वो टाइनी इमेजेस को या इमेजेस को आइडेंटिफाई कैसे करना, जो स्कैनिंग से इमेजेस आई उसको अगर हमने एज ए इनपुट हमारे एआई मॉडल को दिया तो स्मॉल एबनॉर्मलिटीज को भी वो आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई अगर राइट टाइम पे हो गया तो आप तो सोचिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फ्यूचर में. बट रिक्वायर्स दिस थिंग्स एंड दिस इज वेरी नॉर्मल. बट हर एक एप्लीकेशन पर, हर एक डॉक्टर लेवल पर हमारी इमेज का स्कैनिंग होना चाहिए. आपने कभी देखा होगा ना, डॉक्टर एक्सरे ऐसा ऊपर करके देखता है, कुछ रहे ना रहे लेकिन आपके सामने प्रिडिक्ट करता है कि उसने देख लिया, उसने समझ लिया और आपको सजेशन दे देता है. इट इज नॉट गारंटेड कि उस एक्सरे से हर डॉक्टर को हर एंगल की इंफॉर्मेशन समझ में आई है. तो उसको उस समय पर क्या करना होता है, आपके सामने एक प्रिडिक्शन देना जरूरी है. सर यहाँ थोड़ा दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है. एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं, इफ यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड. ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं. ब्लड रिपोर्ट्स को लेमैन समझ सकता है क्योंकि ब्लड रिपोर्ट में लिखा रहता है कि ये ब्लड रिपोर्ट आपके बॉडी पर इतनी मिली है और नॉर्मल रेंज ये है. आप भी समझ सकते हो, डॉक्टर भी समझ जाता है कि सर मेरा हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है सिर्फ, सर मेरे प्रोटीन का प्रॉब्लम है सिर्फ. ऐसी एनालिसिस, इसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेबल एआई. अगर आपकी भाषा में आपको मिल जाए तो ये एक्सप्लेनेबल एआई से आधा काम आपका हो जाएगा. थोड़ा गूगल करके आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या है और क्या नहीं है. जब आप इस इंफॉर्मेशन को एज अ डेटा डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे, नो डाउट आपके डॉक्टर के साथ जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा अल्टीमेट निकलेगा. तो हमारी रिक्वेस्ट तो पूरा मेडिकल सिस्टम से है कि हर वो रिपोर्ट जो जनरेट होती है उसके साथ एआई कनेक्ट कर दिए जाए और हर रिपोर्ट के साथ हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, मराठी में एक एक्सप्लेनेबल डेटा होना चाहिए कि दिस इज व्हाट वी थिंक. हम नहीं बोल रहे हैं कि एआई के जनरेटेड डेटा 100% करेक्ट है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि एआई से जो डेटा निकलता है वो डेटा
हमारी एनालिसिस में हेल्प करता है। ऐसे ही मैंने थोड़ी देर पहले ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन पे बात रखी थी आपके सामने। ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन पे आपको समझाया था, तो ये सब कुछ बता चुका हूँ मैं, बट दीज आर द मॉडल्स। यहाँ पर हम योलो यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत फास्ट है इस केस में, और हमें कंजेशन रिड्यूस करने के लिए ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है बैंकिंग फ्रॉड में एआई कैसे यूज होगा। ठीक है, सो आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है आपके माइंड में, ओटीपी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ओटीपी ओटीपी बता दिया तो साइबर फ्रॉड हो जाएगा। ट्रू है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बट साइबर फ्रॉड के बहुत और एग्जांपल्स हैं। क्या आप अपने कंप्यूटर में कभी लॉगिन करते हैं तो आपने टाइपिंग का पैटर्न देखा है? आप कैसे टाइप करते हैं, यूजर नेम का पासवर्ड जो टाइप करते हैं। अब आप पासवर्ड और यूजर नेम नए बंदे को बता दीजिए, या अंदाजा बता दीजिए कि ये 4-6 कैरेक्टर है, आप टाइप करिए। सो उसकी टाइपिंग स्पीड या उसका टाइपिंग पैटर्न अलग होगा आपके टाइपिंग पैटर्न से। आई एम गिविंग यू डिफरेंट facet. We can analyze unusual activity on your system, on your portal. This is also this is also one way of detecting unusual deviations in spending behaviors. So we have to identify what are the patterns during typing or transactions. This also can be this also can be avoided during टाइपिंग पासवर्ड्स ऑल्सो। वन एग्जाम्पल ओनली, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं कि हम बैंकिंग फ्रॉड को डिटेक्ट करें। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओटीपी आया है तो ओटीपी को कोई रीड कर रहा है या नहीं बैकग्राउंड से। अभी एक एप्पल की एड देखी है आपने, सफारी ब्राउजर की, मेरे यहाँ तो रोज चलती है। सफारी ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है। सफारी ब्राउजर कहता है कि हम ट्रैकिंग को रोक देते हैं, जितने भी डेटा ट्रैकर्स है उसको स्पॉइल कर देते हैं। पर वाकई में हर एक कर पा रहा है या नहीं, किस साइट पर हो रहा है, डेटा ट्रैकिंग करने का मैकेनिज्म जो अनइथिकल हैकर्स ने रखा है वही है वाला पैटर्न हमारे ब्राउजर्स के द्वारा आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डेटा ट्रैकिंग हो रही है या नहीं हो रही है, आपका ओटीपी ऑटोमेटिक सिस्टम रीड कर रहा है या नहीं रीड कर रहा है, हमें ऐसा भी तो करना पड़ेगा आने वाले समय में। तो ठीक है, जितनी देर में डिस्कस करूं उतना कम है। नाउ गोइंग फॉर एआई चैटबॉट इन एजुकेशन। अभी मैंने आपको बताया था पर्सनलाइज्ड एजुकेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर करंट सिस्टम, वी हैव टू डेवलप इट। पर्सनलाइज्ड एजुकेशन बेस्ड ऑन योर स्किल, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, क्या आपने पढ़ना चाहिए, कितनी देर में आपने पढ़ना चाहिए, किस भाषा में आपने पढ़ना चाहिए। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ये आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम में अभी तक फुल प्रूफ नहीं लागू हुआ है। कुछ प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट कर रहे हैं, ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, नीट जेई की कोचिंग करा रहे हैं, उसके कुछ प्लेटफॉर्म इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पर ये मेरे रेगुलर एजुकेशन में, मेरे यूजीसी के बीए बीकॉम बीएससी में ये लागू हो जाए, मजा आ जाएगा। अभी स्वयं का प्लेटफॉर्म भी एआई बेस्ड फुल फ्लैश में नहीं है। अगर ये भी हो जाए तो आपकी रीडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको कोर्स सजेस्ट करेगा, कितनी देर में क्या पढ़ना है ये भी सजेस्ट करेगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग। एआई चैटबॉट तो बहुत छोटा वर्ड हो गया, मेरा तो ऑब्जेक्टिव बहुत ब्रॉड है, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड यू पर्सनलाइज्ड लर्निंग in each and every platform. Disaster prediction and early warning. हम इंडियंस वी आर एट टॉप। आपको ये तो पता है कि डिजास्टर की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी, उसकी वार्निंग हमारे इंडिया में बहुत ही बढ़िया है, और लॉसेस बहुत कम है, जन हानि नहीं के बराबर होती है। हमें पहले ही पता चलता है कौन सा तूफान कब कितने बजे किस किस जगह से गुजरेगा। कभी कभी हम प्रिसाइज नहीं हो पाते, तो जनहानि तो नहीं हो पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रिडिक्शंस
ऑन टाइम करते हैं, इसीलिए शायद हम अपने असेट्स सेव नहीं कर पाते कई जगह पर। अगर यही प्रिडिक्शन सैटेलाइट से आने वाले डेटा के साथ एआई डाल दिया जाए, कुछ मॉडल्स नाम भी दिए मैंने, है मॉडल्स बहुत अच्छे से है, हर रिपोर्ट के साथ अटैच कर दिए जाए, तो फ्लड साइक्लोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आ रही हैं उसकी एक्यूरेसी या उसका प्रिडिक्शन शायद एक्टिवली हो जाए। तो दिस इज व्हाट द रियलिटी। सिमिलरली जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो कौन सी मशीन कब बंद हो सकती है, कहाँ अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर आ सकता है, किस डिवाइस की जो बिहेवियर ऑफ वर्किंग है, किस मशीन की बिहेवियर ऑफ वर्किंग है, वो कब फेल्यूर प्रिडिक्ट कर सकता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। कब एबनॉर्मल टेम्परेचर है, कब प्रेशर एबनॉर्मल है, वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं। अगर हम इस पर भी ऐसे कुछ काम शुरू कर दें, तो नो डाउट हम हम ये कहेंगे यू आर सुपर इंटेलिजेंट जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और वो प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो हम इस चीज को देख पाएंगे। सो इतना आसान नहीं है, हमारे पास चैलेंजेस बहुत हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो आप ही हैं, मैं ही हूँ। एआई सीरियस है, हम उसके साथ हंसते गाते हैं। एआई सीरियस है पर ह्यूमन सीरियस नहीं है, तो इन दोनों को कोऑर्डिनेट कैसे करना, सबसे बड़ा चैलेंज आप है। मैंने कहा मतलब ये है, कोई भी मैं अपडेट करूंगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग कि ये अपडेट एक्सेप्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम को कितने कम समय में मैं कैसे बताऊंगा। आप अगर उसके साथ हंस के बात करते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि उसको हंसी मजाक समझ में आए। आपने उसको सेल्फ ड्राइविंग कार को ड्राइवरलेस बनाया है, फुल ट्रेनिंग दी है, लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, ऐसी सिचुएशन में क्या वो ऐसा बिहेवियर करेगा या नहीं करेगा। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन अभी मैं कंट्री का नाम नहीं लेता। एक वॉर की सिचुएशन थी, टैंक्स होते हैं, यूज होते, तोप तोप बोलते हैं, तोप से बंदूक से हमला होता है, तो उसकी ट्रेनिंग की गई थी। और कि दीज आर द टैंक, अगर आपको ऐसे टैंक दिखेंगे तो आपको हमला करना है, ड्रोन आपको हमला करना है टैंक के ऊपर, टैंक को नष्ट कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। जब भी जितनी भी ट्रेनिंग हुई, वो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई, ट्रेनिंग के बाद जो एग्जीक्यूशन करके देखा वो भी अच्छा हुआ, लेकिन जब वार हुआ तो ड्रोन ने टैंक पर अटैक नहीं किया, ड्रोन ने टैंक को डिस्ट्रॉय नहीं किया। पूरी टीम अनफॉर्चुनेटली ये सोच रही थी कि ऐसे कैसे हो गया। बहुत स्टडी करने के बाद पता चला कि जब जब ड्रोन की ट्रेनिंग कराई गई, पीछे सूर्य था, सन, टैंक के साथ उसको सन नहीं दिखा, हमला रात को हुआ, और वो टैंक को आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहा था क्योंकि सूरज बैकग्राउंड में चाहिए उसे। तो जैसे इंफॉर्मेशन हम देंगे वैसा ही उसको समझ में आएगा। बिल्कुल ये एक छोटे बच्चे जैसा है, इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था कि वी नीड अ लार्ज डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग, बट वी आर नॉट गिविंग अ लार्ज डेटा सेट। या तो हमारे पास समय नहीं है, या हमारे पास लार्ज डेटा सेट नहीं है। ये दोनों कारणों से हम उसको ट्रेंड नहीं करा रहे। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा गाने भी सीख ले, डांस भी सीख ले, योगा की क्लास भी चला जा, समर में खाली क्यों है, पेंटिंग भी कर ले। हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन लार्ज ट्रेनिंग नहीं देते। आपने अगर गौर किया हो तो मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, इस समर उसको पियानो सिखाते हैं तो उस समर में उसको पेंटिंग सिखाते हैं। होना क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। जो आपको दंगल में दिखाया गया ना, बचपन से कुश्ती सिखा रहे हैं तो कुश्ती सिखा रहे हैं। चाइना में भी ऐसे ही होता है, ओलंपिक की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो लॉन्ग टाइम तक के दी जाती है, इसीलिए शायद मेडल्स उनके पास पहुंच जाते हैं। सेम चीज इज देयर कि हमें उनको स्केलेबल बनाना होगा हर डोमेन के लिए। इंटरऑपरेबिलिटी का भी एक प्रॉब्लम है। सपोज परप्लेक्सिटी एक एआई मॉडल है, तो वो सिर्फ रिसर्च पेपर पे काम कर रहा है। नैनो बनाना एक मॉडल है, वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग पे काम कर रहा है। चैट जीपीटी एक मॉडल है जो चैटिंग के अलग अलग फैसेट पे काम कर रहा है। और इतने सारे मॉडल्स होने के बाद कोई एआई हेल्थ केयर पे है तो हेल्थ केयर पे काम कर रहा है।
पर वो डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट डेटा, डिफरेंट मॉडल के साथ काम कर रहे हैं। इस पर कोई स्टैंडर्ड नहीं आया है, इस पर कोई एक दूसरे की मदद भी नहीं लेता। चैट जीपीटी का दुश्मन है जेमिनाई, जेमिनाई का दुश्मन है परप्लेक्सिटी। हमें क्या करना होगा, सारे मॉडल को मिल के काम करना होगा, तभी हम कह सकते हैं दे आर इंटरऑपरेबल एंड दे आर एक और एक 11 हो गए हैं, लाइक दिस। सो इथिकल कंसिडरेशन, बायसिंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ गिविंग इनपुट, ट्रांसपेरेंसी बनी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होनी चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस के लिए हो। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया। उसके बाद आने वाले समय पे जो अटैक्स होने वाले ग्राउंड लेवल पे नहीं होंगे, वो हमारे एआई सिस्टम को ही कोलैब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, हमारे वेपन को ही हैक करने की कोशिश करेंगे, हमारे फाइनेंशियल मार्केट को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन से हमें आगे निकलना है। जॉब के बारे में मैंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमें सिर्फ जॉब को रीस्किल करना है, इक्वलिटी वाइडनिंग करनी है। आई होप यू आर गेटिंग माय वर्ड्स। इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। नो डाउट गवर्नमेंट आगे आई है। आपने शायद सुना हो, गवर्नमेंट ने कहा है कि एआई वीडियोस के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एआई जनरेटेड वीडियोस, एआई इमेजेस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा एआई क्रिएटेड इमेजेस कि ये एआई की है या। तो बड़ी कंपनियों के लिए तो ये रूल कंपलसरी हो ही गए हैं, तो ये रूल शुरुआत हो गई है। हमें सेफ्टी और प्राइवेसी रिलेटेड ऐसे इश्यूज बनाने पड़ेंगे so as to no one can infringe the information. This is something from my side. I have much more to say, but how can I say? I don't know. But इतना बताना चाहूँगा कि I am the best, my India is the best, and what we are doing is fortunately better than all other country. सारे टेक दिग्गज भारत पे भरोसा कर रहे हैं। 47 भारतीय कंपनियों ने अपने कामकाज में जनरेटिव एआई का इस्तेमाल किया है। हमारे रूपी का चैनल और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेमेंट है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमने अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में पोजीशन में इम्प्रूवमेंट किया है, और ये सब कुछ नॉट ओनली इन इंडिया, मध्य प्रदेश भी किसी से पीछे नहीं है। एंड वी आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स टू डेवलप एआई रिलेटेड मॉडल्स, इकोसिस्टम्स, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। सो ये सब चीजें समझना होगा। अभी तक मैं आपको सिखा रहा था, मेरा ऑब्जेक्टिव है आप मशीन को सिखाएं। आप नहीं सिखा सकते तो वी आर फ्रॉम कंप्यूटर साइड, हम मशीन को सिखा रहे हैं। आप सिर्फ मशीन को ट्रेनिंग दीजिए, मशीन का यूज कीजिए। कई टेक्निक होती है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये टेक्निकल डोमेन नहीं होने के कारण मैं यहाँ से आपके पास टेक्निकल फील्ड में नहीं आता जाता। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, डोमेन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। सो आई वंस अगेन आई हैव टू से थैंक्स टू यू। मेरा परिचय डॉक्टर अखिलेश वाउ, यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपके साथ मैं बना रहूँगा लिंक्डइन पर। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू ज्वाइन विथ एनीवन। आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो करें। अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो लिंक्डइन पर आइए और लिंक्डइन पर आके मुझे फॉलो कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। I don't know whether I logged in because just few days before I have formatted my system. Okay, I logged in. So this is my LinkedIn profile. Yes, got my face also. Similarly, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप रिसर्च स्कॉलर्स हैं तो रिसर्च गेट में फॉलो कीजिए। यू विल फाइंड दैट माय प्रोफाइल इज बेटर इन रिसर्च गेट। आई होप आपने रिसर्च गेट सुना होगा। ये जूम का एक बैनर मुझे टाइप नहीं करने दे रहा है। Research Gate. You can follow me on Research Gate. If you are having some doctorate, अगर आप डॉक्टर या रिसर्च या पीएचडी या एमटेक किए हैं तो यू मस्ट फॉलो मी ऑन व्हाट दिस प्लेटफॉर्म रिसर्च गेट। ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव होगा, आपका और हमारा कनेक्शन होगा। भले ही आप मुझे फेसबुक पे फॉलो मत कीजिए, वो बहुत इसेंशियल नहीं है, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स एंड प्रोफेशनल्स आर मस्ट कनेक्ट विद ईच अदर। और दीज आर टू प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।
So I'm stop sharing my screen. Now it's time to ask any question from your side. आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, वर्बली पूछ सकते हैं. हाउ सम टूल्स डिटेक्ट अनयूजुअल बिहेवियर. सो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, भट्टाचार्य जी का क्वेश्चन है ये. बेसिकली जब भी किसी टूल की बात करते हैं, तो मैं अगर नेट बैंकिंग की बात करता हूँ, तो नेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर में ही उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. एसबीआई को उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. मैं और आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते. गूगल अर्थ इंजन फंक्शन कैसे करता है? बेसिकली जो अर्थ सैटेलाइट का जो डेटा आता है, उसके डेटा स्टैटिस्टिक्स को वही स्टैटिस्टिक्स करता है. उसी की स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है एनालिसिस करना, और एनालिसिस को वो जनरेट करके गूगल अर्थ का जो डेटा है, उस डेटा को आउटकम में कन्वर्ट करता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. एनीवन एल्स? थैंक यू भट्टाचार्य जी. So कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन टाइप ओवर हियर. आई एम अवेलेबल फॉर यू. Hello, sir. Very good evening. Yeah. Sir, someone is asking, what innovation should need in AI for agriculture? There is no innovation. Everything is your expertise. What we are expecting is that be combination of two things: your expertise and involvement of artificial intelligence like tools. You have to make it automation. You can incorporate IoT concepts. Very simple, because IoT sensors are having cost of 50 paisa, 1 rupees, 5 rupees. This is the cost of IoT sensor. One thing. Second thing is that you can incorporate AI tools. AI tools are, for some level, they are free of cost. Either you can listen, you can ask, you can see, whatever. But use technical information unexpectedly in place of ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन. वेबसाइट में सब डेटा अवेलेबल है. उसको डेटा की साइड बता दीजिए, उससे बोलिए इसको मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे को छोटा करके दे दीजिए. इतना भी बहुत है. डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू का प्रॉब्लम. इफ यू आर रिसोर्स लेवल प्रॉब्लम, तो उस पर डिस्कशन हम अलग लेवल पे कर सकते हैं. जो मेरा आंसर था वो जनरलाइज था. Thank you, sir. On behalf of Edu-Mentors Pvt Limited, we extend our heartfelt gratitude to our esteemed speaker for delivering an insightful and highly inspiring lecture on artificial intelligence applications in climate-resilient agriculture. Your outstanding presentation highlighted the transformative role of artificial intelligence in building climate-resilient agriculture systems. The valuable insights you shared on the application of AI in precision farming, climate forecasting, crop monitoring, smart irrigation, pest and disease prediction, resource optimization, and data-driven decision-making have greatly enriched the knowledge of our participants. Your expert explanation of how emerging digital technologies can help farmers adapt to climate change, improve productivity, conserve natural resources, and ensure sustainable food security was both informative and inspiring. The practical examples and innovative approaches discussed during the session have motivated students, researchers, academicians, and agricultural professionals to embrace AI-driven solutions for the future of agriculture. We sincerely appreciate your valuable time, expertise, and the willingness to share your knowledge during the International Summer School Training Program on Climate Resilient Agriculture and the Life Sciences. Your contribution made today's session highly engaging, educational, and impactful. It has been a privilege to have you with us, and we look forward to welcoming you again for future lectures, training programs, webinars, and academic collaborations. Thank you, sir. Thank you very much, madam. Thanks a lot. Thank you, participants. Give me the permission to leave the session. We'll meet again. दुनिया बहुत छोटी है. Thank you once again. Participants, you may leave now.